Hyderabad is the best market in terms of buying options or selling options, whatever it may be. Even complete the corporate leasing, especially people is more serious about it in the leasing also, because compared to other you can commute those areas and the budget wise. So those areas I suggest really it's good in Hyderabad market. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हैदराबाद में कौन प्लॉट खरीद रहा है, लोकल खरीद रहे हैं, बाहर से आके लोग खरीद रहे हैं, आईटी एम्प्लॉयज़ खरीद रहे हैं, और यहाँ पे किस किस टाइप के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, उनका साइजेस क्या होता है आइडली, और कहाँ पे लोग खरीदते हैं, और कितना प्राइस में अवेलेबल है यहाँ पे। Good. The good question actually. The home buyers is especially the software employees actually, most of the people, and also business people. When it comes to the plot, a small investor like जो भी saving करके रखता है, so those people actually most of the people is the home buyers, because for the future के लिए वो secure करना है. आजकल घर बंजारा जुबली हिल्स इस गच्चीबौली कोंडापुर में अभी खरीद करना तो मुश्किल हो जाता. Now the people is, most of the people is buying the plots in the Maheshwaram, if you can, the Tukkaguda and Kolluru, Mokila, Shankarpalli. So like pharmaceuticals places actually, those areas actually people is buying the more plots over there. सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आउटस्कर्ट्स में एक प्रोजेक्ट में कितने प्लॉट्स होते हैं आइडली, और उनका साइजेस कितना होता है, छोटा प्लॉट कितना होता है, बड़ा प्लॉट कितना होता है, उनका एवरेज प्राइस रेंज क्या होता है, साइज क्या होता है, और क्या क्या अप्रूवल्स लोगों को देखना चाहिए ये प्लॉट्स खरीदने के लिए। Yeah, see, when it comes to the layout, actually, a layout typically it starts with minimum 10 acres land, where the layout sizes, as the question is, sometimes actually 120 square yards, 140 square yards, 160, 180, 200, 220, 300, 400. आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मान लीजिए 120 स्क्वायर यार्ड से शुरू होके 400 स्क्वायर यार्ड तक भी चले जाएंगे. समटाइम्स एक्चुअली कॉर्नर प्लॉट्स एंड अदर थिंग्स, बिगर प्लॉट्स आल्सो विल कम अराउंड 700 स्क्वायर यार्ड्स आल्सो. दैट इज हाउ यूजुअली इट विल बी देयर. एज यू आस्क, द गुड क्वेश्चन इज द क्या क्या अप्रूवल होना चाहिए विद इन द सिटी लिमिट्स. दैट इज द हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी. विद इन द 50 kilometers of the city is the falls under the HMDA norms. So whenever the people is buying that, it's always suggestible any property which is approved by the HMDA within the radius, it's a good location. So those things actually it's mandatory. So people used to buy for that, and nowadays the government has been make a mandatory. If any layout is having the minimum 100 feet road for any layout, actually 100 feet road has to be there if it is more than around 10 acres of the land, whatever the layout is getting constructed. If that above the 10 acres of the land, the 100 feet road access has to be there. So if like that, those approvals, and also the project has been approved by the RERA or not, so is it been clearly the documents, the link document established or thing, these are the things also has to be, the prospective buyers should think about it. So I suggest and I request you all the people, you think about thoroughly and also check about the legality whenever you are buying a good property over there.